Just make it full screen. Just make it full screen, okay? Is it not? Your voice is a little less coming. Just make your thing full screen, okay? Is it not full screen? अभी नहीं हुआ. Make it at the bottom ना F5 कर दो. F5. Make it F5. F5 कर रखा है. अभी शायद होने वाला होगा. शायद हो जाएगा. चलो, you can continue. No problem. Continue. पता नहीं वो क्यों नहीं होता है. चलो कोई बात नहीं याशना. It's okay. Sometime it happens. Just there is a button at the bottom for. याशना आवाज नहीं बेटा आपकी आ रही. So which button? So which button? There is a button at the bottom. You will see different. There is a slideshow button for slideshow. If you check it at the bottom of the slides, can you see on the bottom right side? Yes, I actually did that, but it's not. Okay, no problem, no problem. I have your slide. Let me play it out. No problem. Okay, don't worry. But, okay. Don't worry. Just check if it is coming for you. आ रहा है? Oh yeah. Okay. चलो ठीक है. Start बेटा. Should I wait more or? No, we start. It's 7 o'clock. We finish. हाँ. Okay. Welcome everyone. This is our very first event. Myself Yashna Sani. I am from our own happiness club, RCOE, that is Reiki Circle of Happiness. From we are from AIBS. So this is our very first event, Happiness Jokes Tournament. I hope everyone has have fun. This is a very casual and a very informal event, so you guys don't have to worry about कि यार कोई क्या बोलेगा and stuff. So please engage more. Okay. Boys and girls, those of you who have joined, thank you for joining. Those of you might be aware of this happiness thing going on for so many months and almost a year. So this event, we did it for the first time, the Happiness Jokes Tournament, almost last August. It was 1st of August. We did the similar kind of an event, and that was our second event of the last year, but this time we are starting again. But this is the first event because this was asked to repeat, and we do it more. And normally we think happiness means what? Happiness means कि दोस्तों है मस्ती, थोड़ी बातें, थोड़े jokes हो जाएं, right? So this would be a kind of open house, could be you can say a public event, you can say a kind of an informal event. So I will request be with the flow and do whatever you think. You remember few jokes, you want to read it out, you want to share some audio, you want to share some videos, and if you want to share the video, something like that, please let us know. You can share to us the links and all, we can play it out immediately. If you have a shairi, which is a funny shairi kind of a thing, you can read from your Google, from your book, whatever you are having, or some any SMS that you are getting that which makes you tease. Please read it out. Okay. So first of all, जिंदगी
का एक जोक समझो. हाउ मेनी व्हेन वी से जिंदगी को एक जोक समझो, किसी को ये लगता है कि जिंदगी भी जोक है? एनीबडी? जिंदगी की जोक है क्या है? कि ये रोज स्कूल जाना, कॉलेज जाना, टीचर के बाद बैठना, होमवर्क करना, फिर ये क्या हो गया लाइफ में, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है? किसी को कुछ नजर आ रहा है कि ये हो क्या रहा है? एनी? अमल, अंश, एवरीबडी? अमल, आर यू हियर? सर हमें नो. इतना सर हमारी एज को इतना लगता ना लगता हो, बट बड़े लोगों को जरूर लगता हो कि अरे यार मैं कहाँ फंस गया, ये जोक बना के रखा है क्या मेरे बच्चों ने मुझको, मेरी मॉम खुद मुझे बोलती है कि उसने मुझे जोक समझ रखा है. हाँ. So there Yeah. was a wife who was saying कि अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ. पत्नी कहती है अजी उठ जाओ, मैं चाय बना रही हूँ. तो पति कहता है तो मैं कौन से पतीले में सो रहा हूँ, बना लो. Something like that. So it is पप्पू, बेटा दो बिस्तर क्यों? if I say mm, if I say there was in the morning only, I was having a session for the corporates. It was a MDP session, and there were many few funny moments that we had it. Normally, we shared one moment which was a kind of a joke also for something. So I said. There was a person who entered. There was a person who entered in the exam hall, but then he was standing at the gate only. स्टैंडिंग एट द गेट, गेट पे ही खड़ा हुआ है और वो अंदर नहीं आ रहा क्लास में. तो टीचर ने कहा कि भाई अंदर तो आ जाओ क्लास के. सो ही सेड सर आई कैन नॉट कम. ही सेड व्हाई? एग्जाम देने आए हो कि नहीं आए हो? सर उसने कहा, बच्चे ने कहा कि सर दिस इज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन. तो सर एंट्रेंस पे खड़े होकर एग्जाम देना होगा. So something like these small moments that we have in real life, small moments in the real life, which are the real experiences and all that, are very funny. Uh, okay, so if I say everybody is free to share the jokes, right, one by one, and the first slide that we are having, or the first session, certificates would be given to everybody, those who are sharing the jokes and all that, and whatever you feel like, आपको जो भी joke याद आता है, जो भी सुनाना चाहते हैं, आप सुना सकते हैं, right? So पहला दोस्तों पे एक जोक हो जाए. Who want to take it the first one? Maybe you can raise hand and then you can take it forward. Oh, दोस्तों पे एक जोक. Anybody? So there was a friend. वो कहता है दोस्तों से प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए. वो कहता है क्यों? वो कहता है बिकॉज नमूने ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस बताते हैं कि बंदा प्रॉब्लम ही भूल जाता है. And I remember one from my life, something like we say that you can tell a lie to your parents, you can tell a lie to your teachers, but you can never lie to your friends. Any guesses why? चेहरे पे पता लग जाता है. Sorry? फेस पे यू कैन सी कि हाँ ये तो झूठ ही बोल रहा है. Because they were the partner in our crime. ओके ओके. They were the partner in our crime. उनसे का छुपाना हमको सब पता ही है. उनसे झूठ बोल सकते ही नहीं हो. So normally we say friends are so close, they know each and every step what we do, and something like this. Gopika, you are here. Gopika, Gurnur. Gurnur is there. Gurnur texted me. Good Okay. evening, sir. Good evening, Gurnur. Welcome to the session of funny, and I'm sure you must be having loads of jokes with you. I'm sure. Gurnur, Not yet, sir, not सुना yet. बेटा, सुनाओ. सर Gurnur, सोचना पड़ेगा सर थोड़ा. हाँ हाँ सोचो, सोचने के लिए पूरा 1 घंटा है. रेहान अख्तर,
Megha, Yutika, Utsav. Okay, so I don't know if everyone has Ludo or not. The Pankaj Tripaঠি's movie. Well, there was this scene in that movie where Abhishek Bachchan kidnaps someone's not kidnaps, but that girl actually plans कि हाँ आप मेरी kidnapping करो. तो what happens कि when जब वो ransom के लिए कॉल करता है ना, वो लड़की उसको बोलती है कि हाँ आप ना मेरे ransom के लिए मुझे कॉल करो. सो वेनी बड़ा नर्वस होकर मांगता है कि हाँ ठीक है आप मुझे ना 10 लाख रुपए दे दो. तो बट फिर वो छोटी बच्ची तक उससे बोलती है कि आपकी फर्स्ट किडनैपिंग है क्या ये. सो दैट थिंग मेड मी लाफ द मोस्ट इस मूवी में. There is a famous saying: true friends don't get offended when you insult them. True friends never get offended when you insult them. They laugh and insult you with something even better. So it is के बगैर जिंदगी भी नहीं है और दोस्तों के साथ आराम भी नहीं है. दोनों के साथ मतलब it's something like going on. Any of you must be having some friends, so can you share some moments which you have with your friends and which are very funny? Anybody want to share? Shweta, Tanishq, Yutika, you should be on cameras. This is not a classroom, right? Classroom में तो okay, I can understand कि वो academic हो गया and then you want to say attendance लगानी है and all that. Anybody? Hello. Take your time, beta. Hello. Yes, please. Palak, Good evening, sir. welcome back. Palak. So, I don't remember any jokes related to friends, but like all the students, like all the participants over here, are they like from graduation, post graduation? Are they at that level? Mix level, mix. Yeah. So I think this almost everyone would connect. I just read something today, and I would really like to share this. The probability of parents of not asking कौन था after a phone call is 0. How many of you agree with this? Again, repeat. The probability of parents of not asking कौन था after your phone call is equivalent to 0. Are people like able to understand me? Yes, yes. So, how many of you, like after a phone call, do you agree that parents हमेशा ये पूछेंगे कौन था फोन पे, किससे बात कर रही थी या किससे बात कर रहे थे? How many of you have actually experienced this? Every day, every time. Every day. That is a fact. And majorly this happens like before because you guys are studying and you're in college, so most probably ये चीज बहुत normal होती है कि किससे बात कर रहे थे. So I just read this, so I just thought I'd just share it with you all. So, yes, yes. This is very common even in the husband-wife also. This Seriously? is not just for friends, but also for husband-wives also. So, like after marriage, do parents ask कि किससे बात कर रहे थे? No. Then the mother, father is replaced by the wife and the husband. Then they ask. Okay. Then they are going to ask. ये किसका फोन था? क्यों इतना हंस के बात कर रहे थे? My dad से हाँ किससे बात हुई, क्या बात हुई? हाँ, इतनी देर तक क्यों बात कर रहे? इतनी कौन सी बात होती है तुम्हारी, राइट? अगर आप पूरे घर में एकदम गुमसुम बैठे रहो, people are okay with that. I'm saying in the majority cases, people are okay with that. But the moment you start talking laughingly, jumpingly over the phone, there will be questions.
कि ऐसा क्या हो गया, हमसे तो इतना हंस के बात कर नहीं रहा, फोन हाँ पे इतना हंस के क्यों बात कर रहा है ये. true. Means I mean to say it's a general case, but this is observation from many people. Yeah. Yes, anybody? Abdul, Yutika, Sachin, Rehan, Manprab. Any friends remember? Any friends memories? Any friends? So there was a, if I remember rightly, there was a friend who got married, and he after few years he told to his friend, "Yeah, you know that lady whom I married. Why did not you told me that she is not the right choice? And now I'm in a misery." The friend said, "You also know the lady whom I married. Did you warn me?" So फ्रेंड्स अलग अलग तरीके से बदला निकालते हैं. दिस इज a famous movie that we have Three Idiots, right? So वो तो पूरी मूवी उसे दोस्तों के ऊपर ही है. And when you are if you want to insult your friend, what is the fastest way? If you want to insult your friend, what is the fastest way or the easiest way? I mean the cutest way. Cutest way क्या है? Anybody? तुझसे ना हो पाएगा, हाँ? तुझसे ना हो पाएगा. ये? Am I audible? Yes. I'm saying that तुझसे ना हो पाएगा. तुझसे ये नहीं हो पाएगा. Yes, this is one way, and some people say Well, it's when you actually tell a encouragement कि हाँ अब तो मैं करके दिखाऊंगा. and when you tell a joke to your friend and your friend insists to insult you, he said बेकार joke था, हंसी नहीं आई. That's how normally people do that. Okay, next move, next one. Do we have a faculty here? Pooja, I think Pooja Modi is here from outside. Hi, Pooja. Hi Nitin, how are you doing? Hi, how are you? I'm good, I'm good. Long time, huh? Same here, same here. Yashna and audience, you should know she is my school friend. it is almost 1994. 1990, yeah, 1994, yeah. 1994. Still So, 1994. yes. कितने साल हो गए? 26 years. 26 साल हो गए. Yes, yes. Good More to than see 26 you. years. Same here. My same daughters here. are jumping over me now. My daughter's jumping over me. That's That's okay. it. That's perfectly fine. Chal, Pooja, tell us Hi jokes. everyone. You promised few jokes, right? Okay. This is okay. I will like because you mentioned your daughter is there and all. Let me share a joke regarding my daughter only. That was not a joke. That was an incident that actually took place in her school annual day, and we were all sitting in the Audi. And suddenly, there are usually kids ना जो escort करते हैं like जो भी chairpersons होते हैं उनको बुके वगैरह के साथ. And she was one of the kid actually who was supposed to give the bouquet to the chairperson. And वो पंजाबी सूट वगैरह पहन के एकदम तैयार थी क्योंकि उसका परफॉर्मेंस भी था. तो and she speaks whatever comes to her mind. मतलब immediately जो भी उसके माइंड में आता है उसे बोलना ही होता है. मम्मी जरा ना यूजली जब भी चीफ गेस्ट बच्चों से इस टाइप से मेरे बच्चों event से joke आते में हैं joke ऑडी बता दो, में please. तो वो मम्मी, उनको please. बोलते हैं कि मम्मी, इट इज please, लाइक आप possible वेरी लग रहे हो. क्यूट, थैंक यू बच्चा एंड काइंड ऑफ अ थिंग. द चीफ गेस्ट रीच द फंक्शन अ लिटिल लेट और उसके पास जो बुके था दैट वाज रियली हैवी. तो जैसे ही उन्होंने उससे बुके लेने से पहले वो लाइक
very cute baby. Oh, आपका performance में. She said, that's okay, but this bouquet is really heavy and you came late. So could you please take this first and then we will talk. Everyone was like in a shock. What this bacha has. And she They are just too said, honest. okay. They are too honest. Too honest. She said, could you please take this first and then we'll talk later because it's quite heavy and you came a little late, sir. So, and everyone was like laughing because वो stage पे थी, mic उसके मुंह के पास ही था almost. So it was a very funny moment and we all were like laughing like कि अभी क्या बोलेगी, अभी ये कुछ और करेगी. So that was a very funny incident. I would love to share कि अच्छा लगा मुझे, मतलब सब लोग को बहुत enjoy किया वो moment I think. वही है कि छोटे छोटे बच्चे जब कुछ भी बोलते हैं, इस मोमेंट पे जो मर्जी बोल जाएं, we always take it a lighter moment and it's a kind of a joy for everything, refreshing, kind of a refreshing. Yeah, exactly. मतलब वो हम बोलते भी है, जोक्स जो होते हैं, हंसी तभी आती है when something unexpected thing happens. Exactly. So these children are like masters in jokes by default. उनका एक एक कदम पे उनको हंसी आ रही होती है. You won't believe these two daughters अभी भी कूद ही रहे हैं, अभी भी कूद रहे हैं. My these two daughters normally they have one. So they have one habit कि in the evening by 8 o'clock वो मंदिर में जाएंगे, भगवान जी को सुलाएंगे. उसके बाद वो सुलाने के बाद they go in their own toys room. वहाँ पे जितने भी इनके टेडी बियर्स हैं उनको सुलाएंगे. ये उनको सुलाएंगे, उसके ऊपर चद्दर रखेंगे. चद्दर लाइक कंबल हम सोते हैं तो कंबल बकायदा उनकी सुलाएंगे. टेडी को सुलाएंगे, उनकी लाइट ऑफ करेंगे. टेडी सो रहे हैं, नाउ डोंट डिस्टर्ब देम. So small things जो होती रहती हैं छोटे बच्चों की. Your kids are far little elder to me, so you have seen all these processes and all that कि इनकी एक जिद होती है, ये है वो है, सारी जिद पूरी करते रहो, जिद ही पूरी करते रहो बच्चों की. तो 18-year-old son also. So उसके भी अलग से ही funny moments रहते हैं. It's not like कि अगर बच्चे छोटे हैं तभी वो इस टाइप के funny moments instantly create हो जाते हैं. But he's like 18 और he's equally humorous और अजीब अजीब से teases and every time it keeps on going like this actually. Thank you Pooja, thank you. सब घर में ठीक है उधर? Everything is fine, yeah. You there? All good here, all good here. Any more jokes from the audience? Pooja stay यहीं पे रहना, हाँ जाना मत. Anybody next one audience please? Suti, Shweta, anybody want to raise hand and say something? Sir, can you hear Yes me? please. Sir, Yes please. sir, my mom is here. Okay. Yeah, she wants Yashna, हाँ बेटा. कैमरा ऑन कर अपना बेटा, कैमरा ऑन कर. Hello, sir. Hello. Hi. Thank you for joining. Yes please, yes please. She wants to share a joke actually about Please, my please, please, childhood. please. Yeah. My daughter jumping on my head. That's cute. Okay. Tell me please. Tell us the joke. We are waiting for. एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं याशना का. ये छोटी नहीं जाओ. आवाज आ रही है? आ रही है. ओके. तो हम ऐसे ही शॉपिंग मॉल गए थे, नए नए मॉल्स खुले थे उन दिनों. तो हम ऐसे टाइम पास करने गए थे वहां पर. तो एक शॉप में हम लहंगे वाली साड़ी वाली शॉप में घुस गए. वहां पे मैंने बोला लहंगे शॉल वगैरह ये साड़ीज वगैरह दिखाइए. तो ये साथ में नहीं मेरे. तो उन्होंने पूछा भैया ने किसके लिए दिखाएं. तो मैंने कहा हाँ मेरी छोटी बहन के लिए दिखाइए. तो एक्चुअली मेरी कोई छोटी बहन है नहीं. तो हम जस्ट टाइम पास कर रहे थे. तो याशना सडनली जंप बोल दी, कौन सी छोटी बहन आपकी? कौन है आपकी छोटी बहन? किसके लिए देख रहे हैं आपको? आप किसके लिए ले रहे हो? किसको गिफ्ट दे रहे हो? ओ शॉप वाला भैया तो मुझे ऐसे देख रहा था कि ओहो मैडम आप तो टाइम पास करने आई हैं पक्का से कि मैं आपको क्यों दिखाऊं कुछ भी. उससे बड़ा एम्बैरेसिंग हो गया था. मगर अब बड़ी हंसी आती है ये सब सुन के सोच के. बस मैम यही लाइटर मूवमेंट्स है मैम. वहाँ पे मॉल में कभी कभार ये पूरे लेट जाते हैं, लेट ही जाते हैं. हमें तो यही चाहिए.
कोई भी बात हो जाए कि हमें झूले में बैठना है, भले वो ट्रॉली में बैठना ही बैठना है इन्होंने, समथिंग लाइक small things वो है ही है. हाँ जी। Anybody? Yes. Thank you for coming. Any so more much. jokes from you, ma'am? Anybody? Anything you want to share? याचना तो अब बड़ी हो गई है, हाँ अभी जी, हाँ इसके जो जोक्स होंगे क्लास वाले वो भी हम सुनाएंगे कभी. हाँ जी, sure, She has sure. just joined my class. She has just joined my class, so we have 6 months to find the jokes for her also. Okay, sir, okay. Sure, sir, sure. Thank you so much. Okay, bye-bye, sir. Thank you so much for joining. Okay, जी. Anybody? Ansh, Yeah, push. Chirag, Palak, anybody else? Anybody can recall any movie jokes? Anybody? Nitin, I would like to share one more incident of my हाँ, please son actually. बताओ. Yes. ये मूवी में एक्चुअली क्योंकि मूवी जोक लिखा हुआ आया बिकॉज एक्चुअली ही वाज आई थिंक 4 or 5 years old और उसे ये कॉन्सेप्ट नहीं पता था वो अमीर गरीब टाइप काइंड ऑफ थिंग कि व्हाट एग्जैक्टली आर रिच पीपल पुअर पीपल. तो हम एक मूवी देख कर आए एंड ही वाज लाइक कि उसके पास ऐसे क्यों है बिकॉज till 3.5 years we never took him to the movies and all that. So I don't remember the name of that movie where we took him, but it was like कि yes हम लेकर गए तो उसके अंदर उसने पूछा इनके पास पैसे वैसे क्यों नहीं, तो वैसे ये पुअर लोग हैं ये, तो he got that concept. और उसके 1 हफ्ता 2 हफ्ते बाद because he was addicted to have chocolates all the time, so it was like कि उसको cavities नहीं हो जाए या कुछ ऐसे. So we decided कि हम chocolates ही नहीं लेकर आएंगे घर पे, so that होगा ही नहीं तो वो खाएगा ही नहीं actually. So once he said कि chocolates क्यों नहीं आ रहे थे, we said we don't have money to buy the chocolates. This was the reason we gave him. So immediately Diwali was about to come, तो आपके relatives festivals वगैरह पे gift भेजते हैं. Same my mom was supposed to send me the Diwali gift and she just took the phone. She asked me to connect to Ujjwal actually कि उन्हें बात करना है कि उससे क्या गिफ्ट चाहिए. So he was like नानी जैसे पूछते हैं बच्चों से कि what exactly you want. तो he said we need chocolates क्योंकि हम गरीब हो गए हैं, हमारे घर में पैसे नहीं है चॉकलेट्स के लिए. So I request कि अभी हम सब अमीर होंगे हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें तब तक चॉकलेट एकोमोडेट कर दीजिए अपने पैसों में से. So this is how you know उसने कुछ मूवी में देखा, हमने उसे एक्सप्लेन किया और उसने अपने कन्वीनियंस से उसको कहाँ पे फिट कर दिया. तो आई स्टिल रिमेम्बर कि he said कि हम गरीब हो गए हैं, हमें चॉकलेट्स नहीं है पैसे खरीदने, मतलब पैसे नहीं है चॉकलेट्स खरीदने, तो नानी प्लीज सेंड मी लॉट ऑफ चॉकलेट्स अगली दिवाली तक. हम गरीब हो गए हैं, हम गरीब हैं अभी. तो काइंड ऑफ थिंग. सो दिस वाज क्वाइट फनी एक्चुअली. ये मूवी इंसिडेंट से उसने ऐसा कुछ पिक किया था. सो इट वाज फन एक्चुअली. ऐसे बहुत हंसे something like that कि there was an essay in an exam. It's a real case, right, in schools. It's a real case that I found it. Okay, there was an essay in the exam and the essay topic was write an essay on a poor person. And this exam was in one of the richest university of the world, right? उस kind of a school. उस school में ये essay आया. Essay on poor person. So one of the child wrote an essay on the poor person saying we have 4 poor person in our home. Those 4 poor person have 4 poor bungalows of their own, and those 4 poor people have 4 poor Mercedes in their home, poor Mercedes, and they are very poor people. They just have 4 rooms in their house. So this was the concept of the poverty in the eyes of rich students in those schools. They think poverty. India में अगर हम बोले ना Mercedes is a rich class, but बाहर Mercedes is a poor class. So people think different depending on their perspective. के Mercedes is a very like a small car, and then you have Lamborghini and Hummer and other kinds of cars. So they think Mercedes poor car है, बहुत छोटी सी कार है वो तो. So उनका ये पर्सपेक्टिव होता है.
So मतलब बच्चे क्या सोच रहे हैं, इट इज द लेवल दे आर थिंकिंग एंड सीइंग, वो सोच के ही वो सब मान लेते हैं। Exactly. Where they fit it actually, वो अपने convenience से उनको fit कर देते हैं और हमारे लिए jokes बन जाते हैं, lifetime jokes बन जाते हैं। हमारे लिए जोक्स बन जाते हैं। सबसे ज्यादा जोक्स तो पति पत्नी पे ही होते हैं, और हमें पता है those who are married, it is a tragedy of their life, but No, how it is could a you say tragedy that? and but it's a joke for others. I totally disagree, Nitin, on this. I totally disagree. My marriage is a blessing. That is the whole game. That is the whole game of the session. Tell me. Yeah. You were saying you disagree. I disagree that the statement you gave on marriage, actually. I said my marriage is an association. It's not a tragedy for me, actually, and it's more like a blessing for me. Not that I'm saying. I'm saying the jokes which we hear normally on husband wife, they are normally it is a laughter stock for everybody. But जहाँ से भी जोक बन के आते हैं, जो उसकी रियल लाइफ होती होगी, उसके लिए वो पेन है। Exactly. Maybe it could be because बहुत बार ऐसा होता है, like either we are into any kind of a conversation in a family or like on TV, something is coming, and when some jokes come or pity दिखाते हैं husbands की तरफ and all that. So the very first statement I tell my husband, don't you dare laugh on this joke. This is not for us, actually. So you don't dare. You are controlling. You see, you are controlling. You are controlling now. You can say that, actually. Okay. Anybody for the next one? Sneha, Shrutkiti, Rehan, Mitok. Boys and girls, jokes, please. I'm sure you must have hundreds of jokes in your memories and in your mobile phone. Every day कोई ना joke तो आ ही जाता है. WhatsApp उठाओ, whichever joke you like it, read it out. ये रोज सुबह का ज्ञान तो आ ही जाता है, गुड मॉर्निंग का, गुड नाइट का, और ये फॉरवर्ड और ये जोक आ गया, तो रोज आना ही आना है। मिटॉक, आर यू हियर? I think नितिन, यहाँ पे शायद आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, एंड दे मस्ट बी थिंकिंग सर जो जोक्स हमें आते हैं पता नहीं वो यहाँ शेयर करने हैं कि नहीं। This much they are intelligent. They will share the wise jokes. I'm sorry guys, whoever is listening, that was just a joke actually. So the joke which I always cherish the most is there was a person who went into a train along with his one child. तो वो जैसे ही ट्रेन में बैठता है, ट्रेन में बैठते ही वो बच्चे को मारना शुरू कर देता है, चाटे पे चाटा। तो बगल में एक लेडी बैठी होती है, वो कहती है कि ये अपने बच्चे को मारना बंद करो, नहीं तो मैं पुलिस बुला दूंगी, मैं चेन खींच के पुलिस बुला दूंगी। वो बच्चे को मारे जा रहा है, तो उसने कहा अगर आपने अब एक भी हाथ लगाया बच्चे को, मैंने चेन खींच देनी, आई विल कॉल द पुलिस। सो उस बंदे ने बच्चे को साइड में किया और उसने कहा हाँ मैडम आप क्या कह रही हैं? तो उसने कहा बच्चे को क्यों मार रहे हो, इतना बेरहम से क्यों मार रहे हो? तो वो कहता है आप जानते नहीं हो कि जो मेरी दर्द की कहानी है, आप जानते नहीं हो। कह रहा कोई भी दर्द हो, ये बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो वो कह रहा एक हफ्ते पहले जो मेरा एक हफ्ते पहले जो मेरा फादर साहब थे, जो मेरे फादर साहब हैं, वो मुंह खोल के सो रहे थे, तो छोटा सा सांप मुंह में घुस गया है। उसको बुलाने के लिए हमने एक सपेरे को बुलाया, वो तो सांप निकला नहीं, घर में 100 सांप और घुस गए। तो वो सांप को देख के जो मेरी माँ है वो घर छोड़ के भाग गई है।
अब वो मेरा बाप उधर अटका हुआ है सांपों के बीच में, उधर मेरी माँ भाग गई है, वो मेरी जब माँ भागी है तो मेरी जो बहन थी उसको मौका मिल गया, एंड शी आल्सो रैन अवे विद हर बॉयफ्रेंड। सो वो भाग गई है। अब उसको ढूंढने के लिए मैं जिस ट्रेन में चढ़ना था विद मेरा बेटा है, तो मैं अपने बेटे को लेके ट्रेन में आना था मेरे को कि आई हैव सर्च माई सिस्टर, पर ये ट्रेन में मेरा बच्चा खो गया है और ये बच्चे ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। अब मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया है और ये बच्चा मेरे साथ में ट्रेन में घुस गया है, और तो और जिस ट्रेन की टिकट थी ये टिकट वो खा गया है और मैं गलत ट्रेन में चढ़ गया हूँ। सो मैं अपना दर्द क्या बताऊं कि आपको मैं कैसे समझाऊं कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में। सो इट इज मैनी पीपल दोज हु आर हैविंग अ लाफिंग फेस, इतने दर्द छुपे हुए हैं उसके अंदर, इतने दर्द छुपे हुए हैं, but they are somehow managing and they are still keeping the very uplifting face, or you can say a joyful face, but they are still keeping a balance. So हंसते रहो, खुश रहो, लाइफ में जो हो रहा है उसको बैलेंस रखो। दाढ़ी बढ़ती है बड़े, बाल झड़ते हैं झड़े, बैलेंस करते चलो। So जिंदगी को तो ऐसे ही जीना है, otherwise there is no way out for that. We have one more guest, Sanjeev ji from Chhattisgarh, from Nico Industry. Sanjeev ji, are you here? Sanjeev ji. Yes, sir, I'm here. Thank you for coming from Chhattisgarh, Nico Industries. Thank you so much. और आज जो आपसे मिलकर अच्छा लगा था सर, when we were in the session. So सर ये सेशन जो है ये हैप्पीनेस के ऊपर है, it is on jokes जो बताया था मैंने। इसमें anybody who is coming they have to share 1 or 2 jokes of their life and all that. आपके जिंदगी में कोई जोक हो या विद जोक यू लाइक, 1-2 आप शेयर कर सकते हैं सर, ज्यादा भी शेयर कर सकते हैं, एक ही लिमिट नहीं है। Audience, please note, Mr. Sanjeev is executive in Nico Industries in Chhattisgarh, and Nico is a kind of a #1 company in the whole world in the kind of steel industry. And yes, sir. Yes, it's my pleasure. It's also a joke. Yes, sir. Yes, sir. बस सर आप हंसते रहिए और 2-3 जोक सुनाइए सबको सर, प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। Sir, you can put the camera on if you want. You can put the camera on also. Okay, I've just reached to my home, so so I'll switch on my camera after 10 minutes, sir. No problem, sir. No problem. Continue, please. We can wait for you. Sir. Yeah, I'm hearing. Okay. Yes, please, audience. अच्छा, कोई यहाँ किसी के यहाँ पे कोई छोटा बच्चा है, उसको बुलाओ और उसको बोल जोक सुनाने के लिए, उसके बाद बहुत जोक्स हो। Anybody have a small child? Pooja, you can call your daughter. Her friends are there in her room actually. They all bump in. सबको बुला लो, बच्चों को बुला लो, सबको बुला लो। No ways. Actually, No, बुला लो। बच्चा पार्टी जोक. This is बच्चा party night time. They're watching Harry Potter. So once they'll come out, you yourself will feel actually कि अब यहाँ पे शोर आ गया है, अभी उनका मूवी खत्म ही होने वाला है, and they're just having popcorn. So just give me 5-10 minutes. Once they are through with it, they'll come out on their own. Anybody here having a small child, a small younger brother in the home, जो अभी स्कूल में हो या कहीं? Anybody? Why don't you ask your daughter to crack a joke over there? Or to... They are not able to think a joke right now. Let me try. I will call them live on the... इधर आओ, कन्नू इधर आओ. Sir. Say. I have a one-liner joke. सुनाइए. कोई भी जोक सुनाइए. आता देखो कोई जोक. सुन रही है? She is saying joke होता क्या है? सुन रहे हो? तो अभी तो उसका. Expression is a joke actually. One-liner joke. हाँ सर, संजीव सर। One-liner joke is एक गुड़िया बचपन में मर गई। हो, गुड़िया बचपन में मर गई। एक गुड़िया बचपन में मर गई। ओहो। पापा। So there was a kind of a miser man, a very
miser man who went to a kind of a sweet shop. तो दुकान पे जाता है तो वो कहता है कि ये 5 किलो रबड़ी, मतलब मुझे ये सब चाहिए, आप सब इसको जरा मिक्स कर दीजिए। तो वो कहता है 5 किलो रबड़ी, 5 किलो लड्डू, 5 किलो उनको मिक्स कर दीजिए, और 5 किलो ये 4 किलो ये 1 किलो ये। तो दुकानदार खुश हो रहा था, बहुत खुश हो रहा था कि आज कस्टमर बहुत अच्छा आया है। अगर वो उसने लड्डू को मिक्स करना है, उसको खराब ही करना है तो उसकी चॉइस है। लेट मी कीप ऑन मिक्सिंग एवरीथिंग। तो जितनी मिठाइयाँ थी को वो मिक्स करता जा रहा है। जब मिक्स हो गया तो उसने कहा भाई साहब इसमें से 100 ग्राम दे दीजिए। So those who are miser people, they will look like magnanimous. They will look like magnanimous, but they will always have, in the end, they will show their miserliness. They will, in the end, they show it out somehow. Sanjeev sir, और कोई joke sir, which is common in Nico, which you normally hear very often on Nico personal groups and all that, कि ये famous हमारा joke है. Sir, this is the Aditya. Yes, please. Aditya sir has joined. Sir, good evening. हेलो Sir, good evening. संजीव सर, मेरा भाई फिर ग्रुप सर। संजीव सर, हाँ जी संजीव सर, नेटवर्क मेरा आवाज आता है? यस सर, सुनाइए सर, आवाज आ रही है आपकी। आई कैन हियर यू। हाँ सर, सुनाइए, जोक सुनाइए सर, आप कह रहे थे कुछ। हाँ, एक जोक सुनाना चाहता है, कैन यू अलाउ? बिल्कुल सर, एवरीबडी, सो फॉर होल कम्युनिटी, एवरीबडी कैन शेयर। So you can put the camera on if you want. Yes. Yes, you can say sir. कैमरा नहीं। बगैर कैमरे के भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, बगैर कैमरे के भी बोल सकते हैं। तो ठीक है। हेलो, आवाज। नमस्कार मैडम। सुनो। यस मैडम। आपका नाम रजनी है और आप एक स्कूल में टीचर हैं, तो ओके, सुनाइए प्लीज। सरिता एक टीचर होती है, स्कूल की अध्यापिका। तो वो बच्चों को क्लास की जो ताजमहल है वो कहाँ है, तो बच्चे बोलते हैं ताजमहल तो तो मैडम बोलती है नहीं, ताजमहल दिल्ली में है। तो कहते हैं और घर जाके पेरेंट्स बोलते हैं, कंप्लेन करते हैं कि मैम तो बोल रही हैं कि ताजमहल जो है वो है दिल्ली में। तो पेरेंट्स भी नेक्स्ट डे स्कूल जाते हैं और टीचर से कंप्लेन करते हैं कि मैम आप तो बहुत रॉन्ग बच्चों को लेसन दे रही हैं कि भाई ताजमहल तो कि पहले आप 6 महीने की फीस पे कर दीजिए, उसके बाद जो ताजमहल है वो दिल्ली से आगरा शिफ्ट हो जाएगा, नहीं तो ताजमहल दिल्ली में ही है, दिल्ली में ही है। थैंक यू। अगर फीस तो हो जाएगी तो आगरा। इनका वाला okay sir, thank you sir, thank you for madam, I'm just switching off the camera session. Thank you so much. ये बेटी भी कुछ सुनाएगी जोक, कैमरा बेटी भी जोक सुनाएगी, बेटी भी जोक सुनाएगी। she's shy, little bit shy. Thank you so much sir for joining, thank you so much. So we will join after 10 minutes with camera. Okay sir, okay, okay, thank you sir. Aditya sir, you are here. Sir, I'm now please sir. Ashna and has requested me to be the part of the event, so I always with a student and you always creating the good environment. So my lots of congratulations to you and to Ashna also. She is leading the event also. So that is amazing to see the kids which have joined initially and now they are part of the handling the event. So that is something good. Regarding jokes, I already mentioned to Ashna, I am poor in that. I can listen good jokes. There is no so poverty. whatever the jokes that they will bring more happiness to each one of us.
And thank you, sir, for connecting us in this time of period, which I always say happiness is needed, and which you are doing such a good job. Congratulations to you, sir. एक जोक सुना एक तो सुना दो सर, एक तो सुना ही दो। ऐसे तो रुक नहीं जाते, हमेशा मिठाई खिलाते हैं। अच्छा, मिठाई खिलाते हैं? मतलब जोक। हमने एक्सपेक्ट किया था। Okay, okay. Boys and girls here, Amal Shahji. Amal Shahji, we love your watch so much. We love Yes, your sir. watch. Amal, जोक सुनाओ बेटा, चलो। Hello, I'm sorry, sir. सर इज आस्किंग कि कोई जोक बताइए आप। Oh, No jokes, Amal? Any incident, any sir, I was joke? enjoying listening to everyone else's joke. I'm not much of a jokester myself. Any incident? Yeah. Okay. Megha. Shrukriti. Yes, Beta, sir. this is an informal Sir, thing. I I am- know you are not used to informal events, so this is always an informal event. It is sometimes we have guests from different countries also. CEOs comes, directors comes, just like that. So this is the only thing that I get a compliment. So even CEOs comes just like informally, just like that. They just come. So please remember, I always keep this even very informal. So you should not shying away. No need to worry about anything. It's very informal. Okay. Otherwise, happiness becoming formal na. Happiness खत्म हो जानी है. ठीक है? Don't worry. Say beta what joke you have. Happiness begins with T. Sir, you called me that time, sir. I really don't have any jokes to say. I was just like enjoying everything. Okay. No problem. No problem. Nitin, Anybody? Yashna? Nitin, Yes, please. Yes, Pooja. the thing is, the slide says only bacha party. So if I consider all your students the bacha, so I would like to share one of a very, I won't say important, very funny incident when I was actually a bacha college student like them. But जो भी ये सुन रहा है, please, I just want to say don't practice it. और ये student life के लिए बहुत अच्छा नहीं है. I would love to share. I was in final year of my graduation. I was doing BCom honors. Final year है और वो clear करना बहुत important है. Though I was a very bright kid, अच्छा first division से मैंने अपना graduation किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज से. तो लेकिन कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं. It was a final year और ईयर उस समय लाना वाज नॉट अ गुड आइडिया. 4 साल का डिग्री मिलेगा तो दैट थिंग कम. तो फाइनल ईयर आपको क्लियर करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. तो और उस समय फोन वगैरह का इतना ट्रेंड नहीं था कि क्या पढ़ रहे हैं काइंड ऑफ अ थिंग. और थोड़ा सा ब्राइट स्टूडेंट होने की वजह से उस समय फ्रेंड्स के साथ मेरा लाइक ड्यूरिंग एग्जाम डेज काइंड ऑफ अ थिंग कि ठीक है वी आर विद इन आवरसेल्फ एंड वी आर स्टार्टिंग. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 22 years बैक. तो फोन पे इनकमिंग भी पेड होता था. तो फोन का इतना ट्रेंड नहीं था कि every moment you're discussing. So I went to the college fully prepared for my exam actually, and I was like, okay, because in last 2 years I was doing really great. तो मैं जैसे ही पहुंची एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से 10-15 minutes पहले मुझे पता चला आई एम प्रिपेयर्ड विद द रॉन्ग सब्जेक्ट. आई वाज लाइक oh my god, means oh my god was like a small word right now. लेकिन मेरे होश उड़ गए थे because I was a good student and I was expecting कि मैं already first year में topper थी college की. तो I was कि final year में again I'll be coming out with good marks ना. और जब आपको ये पता चलता है कि आप एक और ये actually ये joke नहीं है, सही में मेरे साथ हुआ था. I was like कि अब क्या. So the very first thing that came to my mind कि मेरी बेस्ट फ्रेंड शी वॉज इक्वली गुड इन स्टडीज. तो बस उसी का ही एक सहारा है और वो ही मुझे किसी तरह से एग्जाम
clear करा सकती है. And I went in the examination room. I was a good student. Invigilator knew me. So I said I'm not feeling well. I need to sit at the back because I need, like, ये झूठ था जो मैंने बोला उनसे, just to sit aside by side my friend so that she could help me. और पेपर स्टार्ट हुआ 3 घंटे का. मैंने उसका शीट लिया. आई एम सॉरी स्टूडेंट्स हु ऑल आर लिसनिंग, बट आई डिड दिस बिकॉज उस समय कुछ और समझ नहीं आ रहा था. एंड विथ हर हेल्प आई समहाउ मैनेज्ड. And with my, it was not like कि मैं बिल्कुल ही blank थी पेपर को लेके, because as I said, I was a first year college topper और मैं अच्छा एक student थी. तो लेकिन somehow उसकी help से मैंने वो पेपर clear किया. और जो कभी यहाँ नहीं है, जो जब रिजल्ट आया तो था कि my friend scored 42 out of 50 in that paper, and I scored 47 out of 50 in that exam. Again, I was the topper. In particular that subject in my college, and and till today she's friends with me, like from last 26 years we are friends. And she said, and even to my kids, she says, ye graduation इसने मेरी बदौलत किया है. And she is like, कि तेरा ऐसे मार्क्स कैसे, मतलब how you cheated on me. So I said, no, नकल के लिए भी थोड़ा सा अकल की जरूरत होती है. I did copied everything. I wrote down what all I knew, and then I took your help. So this was a big joke of my life. I actually did this actually, कि copy किया और ये किया. हाँ, ये ना एक वो मूवी थी ना, थ्री इडियट्स वाली, के समथिंग लाइक दैट, के अगर मतलब दोस्त के मार्क ज्यादा आ जाए ज्यादा दुख होता है, ऐसा कुछ डायलॉग था उसमें, कुछ डायलॉग था. Exactly, कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो दुख होता है, लेकिन अगर आपका दोस्त टॉपर होता है तो आपको और दुख होता है. और इस केस में मेरे दोस्त ने मेरी बहुत मदद की थी एग्जाम में, and she ended up with getting 42 out of 50 and I scored 47, and that was the highest in the college again. So बच्चा पार्टी, I was not in like, मैं चीटिंग के पर्पस से नहीं गई थी वहाँ पर, बट चीटिंग करना पड़ा. और ये मेरी लाइफ का एक फैक्ट है जो कि लोग आज जोक की तरह लेते हैं. एवरीवन इन माय ग्रुप, माय फैमिली नोज कि मैंने ऐसा कुछ किया था फाइनल ईयर के अंदर, बट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज माय कॉलेज नेम है. So we can say this is a दांत तोड़ जो पूजा for you. I think so actually. I think so. ये बहुत funny incident है मेरी लाइफ का actually. तो अगर वो पूरा सीन मैं याद करती हूँ, जब मैं क्लासरूम में गई and I was pretending to the like professor की ma'am, I'm not feeling like good. I said, and I had that kind of impression that she's a very good student and like topper रहती थी. Okay बच्चे, you need something. I said no. So I took the advantage of that image of mine actually in the college and did this actually. But students, आपने कुछ सुना नहीं है जो मैडम ने कहा है, ऐसा कुछ नहीं सुना आपने, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब exceptional cases होते हैं. Nitin sir, I add in this what ma'am has said. Aditya sir, please. Yeah, see what ma'am has narrated. I have similar story, but I have a different version or a different aspect which is there. आप भी सुना दो sir. Story a number of time in my classroom where I just want to make student feel motivated and anything. So what ma'am has mentioned, I also was in, I think some 8th 9th class I was there. There was subject called social sciences and there is a subject called science. And I had, as a kid, we paste the timetable on the wall and we see it and then we go it. As that time, what happened, class-wise timetable used to come. So I had seen and I thought it is my science paper. As ma'am is topper, I was also topper. I prepared and I had gone for the, but my home and my school is nearby. It is a 5-10 minute walk is there and my teachers are also living in my own colony there. So when I was walking and I reached there, and as I have a habit of morning, I practice. There is a tree where I go there and then I study. So one of my friend has come and asked what is altitude and all, because geography is also part of social science. So I had given all the exam, but after that he started, who is Humayun? How you are saying this is not, we have a science paper. He told me that you got a social science paper. I rush back to my home and in between I met with my teacher also. I said, can it be possible that I give today social sciences and science can go another day? My teacher said, no, it is not possible. So I rush back, I come and flip the notebooks and again I go back to my school. And when I started giving papers, so most of the teachers are concerned because I am a topper and they come to know that has happened with me. So every teacher is coming and saying, and after I think 3 hours paper is there, after 1.5 hours, I am done with my paper and I was sitting.
So every teacher was coming and checking my paper and saying, "Oh, how it is possible for you?" So what happened? Every exams, because that was a half yearly exam. We have a winter breaks, and during winter breaks in my childhood, and still I have a habit of that I read aloud on the I go on the roof and I read aloud in the sunlight, and then I. So the time when I was writing my exams, right, I was able to recall all that incidences are there. So what I say to students that if you do pre-preparation of your examinations, that will always help you the time when some such type of incidents take place in the life. And so from that day onwards, every one was surprised. As ma'am has mentioned, we got a highest mark in the classroom of science that time. I remember 42 was a mark, and I was the topper of the class. So everybody was surprised, and every teacher is saying, "Yeah, let's just presume if it was a social science, what you have done in that." So and why I am saying this, what when I was hearing ma'am being an intellectual topper, no, it's always a feeling that we should not do anything bad in our life. What ma'am has mentioned, it was such tense situation, but still she has to look for. But again, I'm mentioning it is what ma'am is feeling, that 60-70% what you know, that is what you are applying, and 40% assistance is giving a motivation to you that yes, I can do it, right? So that is one aspect which is there. But another funny incident which I say you, there was a poor student in my class. In one exam, he has told me one filling the blanks. Today, in entire, whenever he talked to me in my group or somewhere, say, "Do you remember that exam? Do you remember that exam?" He never says. So you just want to make you feel that that one time I told you that answer to you. So it always happens. Everybody have its own motivation, and these all small memories always help us to grow in our life. So I would say yes, tough situation may come, but if we have prepared ourselves, chances are there we can face that situation also strongly. So that's from my part, because I can associate what Pooja ma'am was saying. So thus I had expressed myself. Thank you, sir. So वही है कि I now both of you have said it, so let me open my cards also. So so it is a different kind of a situation for me, but थोड़ी funny है कि नहीं है कि emotional drama है कि क्या है. But then I did my BE chemical from Baroda. So it was my last semester, last exam, and we were having two friends in my. I stayed in hostel. I stayed almost 17 years in hostels. Almost after my 12th, I was out of my home only, traveling. So in my hostel in engineering college, last semester, last exam, and we were two friends in the same room. So I told my friend ke exam is at 3 o'clock, please wake me up at 1 o'clock, something like that. So we have the same exam, same we have to go, they will go by my scooter only. I had my scooter at the time, हमने साथ में ही जाना होता था. So और I don't know whether he likes me or not, whatever, तो बाद में पता लगा मेरे को. But last semester, last exam, उसको मैंने कहा मुझे उठा देना, मुझे खाना भी खाना है, मुझे उठा देना. And when I woke up, it was almost 2:45. And I have to pick up my scooter, and the travel was almost half an hour from my hostel, the college and all that. So मेरे को समझ में नहीं आया कि वो मैंने किया कैसे, एग्जाम हो कैसे गया. उस समय I was in such a panic situation कि 3 बजे एग्जाम शुरू होना होता है, 3:15 तक 3:20 तक दे लॉक कर दे, सब लॉक हो जाता है. Somehow I managed कि मैं उस पर गुस्सा करूं कि क्या करूं. But then it somehow happened, थोड़े नंबर कम आए, obviously we had the grace marks and all that, but then finally we did it. But I remember one of my senior, I have two very funny seniors, उनका अलग कहानी थी. एक सीनियर था, you will not believe, याशना and everybody, श्रुति थी, अगर एग्जाम में 5 क्वेश्चन आए हैं और 5 में से 3 करने होते थे, तो वो सीनियर हर बार 5 में से 5 करता था, और वो कहता था चूज एनी 3, चूज एनी 3. और एक मेरा सीनियर था, I even did this once in my 12th pre-board. Actually, I was asked to do 2 questions out of 3, and I was a little dicey among 2 questions. So I wrote down all the 3, and I wrote a note for my teacher that in whichever question I score more, please take that into consideration. And So then I also हाँ, did in 12th So pre-boards actually. for me, it was like that I just know that 3 points
this question के I wrote everything in those question and I asked them कि please आप ना मुझे number दे दीजिए. And there was one of the senior who did chemical engineering, my senior, my super senior, maybe दो batch ऊपर होगा हमसे. So he got a job in one of the chemical company in Baroda, Aditya sir. He got Yes. a job in chemical company in Baroda, and then after few months he was fired. तो हमें पता लगा कि ऐसा हुआ क्या कि why a senior was fired. ये पता लगा था कि वहाँ पे कुछ एक्सप्लोजन हुआ था उस कंपनी में, कुछ वो कहते हैं वो होता है ना बॉयलर, केमिकल में वी हैव बॉयलर्स, तो वो ब्लास्ट हो गया था. सो देन वी एक्सप्लोर्ड कि ऐसा क्या हुआ कंपनी में कि और उसको वो निकाल दिया, ऐसा हुआ क्या. देन वी गॉट टू नो कि दिस सीनियर वाज द इंचार्ज ऑफ द बॉयलर इन पर्टिकुलर नाइट एज अ शिफ्ट इंचार्ज. और उसी दिन वो फट गया था बॉयलर, उसी दिन फट गया था. Nothing happened to anybody, but वो बॉयलर फट गया. Then in the what we say the feedback session कि कैसा क्यों हुआ, क्या हुआ, जब इंक्वायरी होती है तो पता लगा था कि इस सीनियर ने चैप्टर जो था बॉयलर का, मतलब जो फुल सब्जेक्ट होता है बॉयलर का, मतलब समथिंग लाइक इन अ होल बुक वी हैव अ चैप्टर फॉर बॉयलर. तो इस बंदे ने वो चैप्टर हैज टेकन एज एन ऑप्शनल. जैसे होता है ना कि हम तब तैयारी करते हैं एग्जाम की कि अगर 5 क्वेश्चन आएंगे तो अगर हमने एक क्वेश्चन निकाल दिया 4 पे फोकस करेंगे. हम सब नहीं पढ़ते, हम कुछ कुछ ही पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है, बाकी भी टाइप ऑफ ऑप्शंस. तो इस बंदे ने ऑप्शन पूरा निकाल दिया था बॉयलर के ऊपर. सो ही हैज नो क्लू हाउ टू डू एंड एवरीथिंग. तो उसी दिन वो फंस गया और वहीं ब्लास्ट हो गया. So this is how the reality comes in chemical industries and all that. कि everything is mandatory, everything is required. पता नहीं कौन सी चीज कब काम आ जाए, something like that. So that was a very sensitive joke, but not a tragedy, or you can say tragedy. सब ऐसा हुआ था. Very funny thing. I think we have crossed 8 o'clock. Boys and girls, last joke, and then we will conclude. We don't want to go more than 1 hour. Anybody want to say something, boys and girls? Nitin, a lot of students might be here. मैं students को जो मैंने पहले अपना incident share किया, that was I know that was not very good, but here also it is good. It is good. I It is want very to share informal, one हाँ. more thing. Like मैं आजकल जो बहुत ज़्यादा stress देख रही हूँ students के अंदर, exams को लेकर, fear लेकर भी इतना pressure रहता है parents पे भी. So regarding this, I would like to share one of the incidents of my life actually. And it's not funny, but yes, आप उसे कैसे लेते हैं वो बहुत important है. I am sharing this just because a lot of students are hearing me, and this is just to let you all know that even when you are in student life actually, and a lot of things are going simultaneously in your life, like exams चल रहे हैं, practicals चल रहे हैं, classes चल रहे हैं. But I just request you all to, everyone must be having any of the passion, कुछ sports पसंद होगा, कुछ. Please don't leave that actually. I remember I was in 12th standard. मेरे board exams थे. My brother was in 10th standard, and we were like mad about cricket. We were like cricket freak actually, cricket freak. मतलब really हम दोनों को वो tag everyone used to give कि हर चाहे one day हो, चाहे test हो, बस देखना ही देखना है actually. And if any of the parent is also listening to me, this is for them also. So what happened is like मेरा 12th का first exam था और 1996 में, और उस साल इंडिया और श्रीलंका का फर्स्ट वर्ल्ड कप मैच आ रहा था एक्चुअली टीवी पे, और उस समय डे एंड नाइट मैच होते थे. तो इट वाज लाइक कि अब 3 बजे रात को मैच स्टार्ट होना है, अगले दिन मेरा बोर्ड एग्जाम है. तो व्हाट शुड आई डू? तो मैं रात को 2 बजे नहा धोकर यूनिफॉर्म पहन के, क्योंकि अगले दिन मेरा एग्जाम है, आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माय टीवी. And around 4 o'clock, me and my brother, he was not having his exam, I was having it. So my mom came at around 4 o'clock in our room and she said, क्या कर रहे हो? And why are you dressed? So I said, match is going on और कल मेरा एग्जाम है, तो जाते वक्त टाइम नहीं मिला मैच खत्म होने, तो मैंने अभी से यूनिफॉर्म वगैरह पहन लिया. And she was very cool. My mom was really cool as a parent. She never pressurized us for any kind of like कि बोर्ड एग्जाम्स हैं तो पढ़ते रहना है या पार्टीज नहीं करना या ये सब नहीं करना. ऐसा प्रेशर मेरे ब्रदर और मुझ पे कभी भी नहीं रहा फैमिली से. एंड वी बोथ डिड रियली वेल एक्चुअली इन स्टडीज. तो
she was like, "Are you prepared for the exam?" This is what all she asked me, and I said, "Yes, I am." So she said, "Okay, best of luck." And because she had to go for some work in the morning, and because उन्हें पता था कि शायद हम दोनों नहीं, so she wished me and she just went. And और मैं मैच आखिरी तक देखकर I just ran off because the center was around 4 kilometers away from my house. लेकिन बाय चांस की बात है कि मैं जो स्कूटी पे अपने ब्रदर के साथ जा रही थी, ब्रेक डाउन हो गई और मैं बहुत ही लास्ट मोमेंट पे अपने एग्जामिनेशन सेंटर पहुंची there. And the very first thing he did ask me कि आई कार्ड लाई है and all that. My vice principal from, and he said, क्रिकेट देख रही थी ना बैठ के, क्रिकेट मैच देख कर आई घर पे आई. So I said, "Yes sir, जल्दी से अब जाने दो अंदर साइड." So he said, अगर रिजल्ट पे कुछ कॉम्प्रोमाइज आया ना देखना तू, मतलब he was, एक होता है ना जो टीचर्स या काइंड ऑफ थोड़े से अच्छे बच्चों पे रहता है, तो I was a good student throughout. So I said हाँ, तो he said, and I was running towards my room कि लेट हो जाएगा, and in the back स्कोर तो बताती जा, स्कोर क्या हुआ, कौन जीता है, because at that time फोन्स वगैरह इतने नहीं थे कि सेंटर्स पे आपको इंफॉर्मेशन मिले एकदम. So that was a very funny incident कि मैं भाग रही हूँ and my teacher was asking कि स्कोर बता जा तो क्रिकेट दिख रहा है. So here for all the students I just want to say कि जितना भी प्रेशर हो बॉस लाइफ में, एग्जाम्स का, क्लासेस का, whatever, don't leave your passion actually, just follow them, because वो आपको एक एक स्ट्रेस से ब्रेक देता है, which is really important. And time management and balance of everything is important in life, whether it is career, studies, happiness, food, family. So please try to balance everything and things go with the flow then. Thank you, That's Pooja. it. Thank you. And I heard recently the richest man. Incident, Aditya sir. one liner. What ma'am has mentioned. See, I also, when I was giving examination, I have a passion of reading comics. So whatever my exam is there, I will bring 1 or 2 comics. I will read it, and after that, I will attempt one. Later, when I grown up, I start seeing movies. So whatever exam is there, once exam finished, not initial starting of exam, I go and watch one movie, and then I go for preparation. So what happens? You are relaxed, and you are, because relaxing is very important during exam. What happened, you keep up so much of stress on your mind that even you are learning, you will forget it. And it has been very biologically also, oxygen's requirement on the brain is important. So I advise each one of you, do not awake in the late night, the time when you have exam, because morning what happened, you are not having that much of calories and your oxygen levels are down, and examination you will start forgetting whatever you learn. Right. So it is very, very important to have, and if you are having nowadays oxytocin and numerous hormonals are there, which we know that for happiness are there. So these secretion take place when you read something interesting for your own way and you watch something interesting. And I think watching this event also is something bring happiness to each us, because it is stimulating that happy hormones in our mind, and that it reduces our stress. So thank you very much, sir. Thanks, Aditya sir. Sanjeev ji, I think you were on camera. I think you went back. Yes, Are you sir. here? Yes, sir. Please, I was welcome, sir. actually going for outing, so I thought I must share one of the incident of my life. Happened. Please, sir. Please. Last year. Actually, one of my friend Arvind. You have met him in my conference hall during trial. Actually, we visited Rameshwaram last year. Hello. Hello. Can you hear me? Hello. Yeah, you are audible. Sanjeev ji. Am I audible? Sir, आवाज नहीं आ रही आपकी, नेटवर्क. हाँ सर, आवाज आ रही है. Sir, you are audible. आवाज आ रही है ना? आवाज है सर? सर. So actually वो मैं अरविंद और मैं रामेश्वरम विजिट किए लास्ट ईयर. So रामेश्वरम में तमिलनाडु. So हम लोग दिल्ली वाले, हमको कुछ तमिल तो आता नहीं है. सो मॉर्निंग में क्या हुआ, जब मॉर्निंग में ट्रेन पहुंची तो स्टेशन पे जाके मैंने न्यूज़पेपर लिया. सो न्यूज़पेपर, मैं उसको कुछ नहीं बोला, न्यूज़पेपर दे दो. न्यूज़पेपर में ले लिया, तो ये भी नहीं देखा वो किस लैंग्वेज में है. अब वो तमिल में था डेफिनेटली. तमिल में न्यूज़पेपर था. तो अरविंद मेरे को बोला, सर आर यू क्रेजी, डू यू नो हाउ टू रीड तमिल? मैंने कहा छोड़ना यार, अपने को तो पराठे बैठ के खाने इसमें. So I turned around the situation. Actually, I wanted to read newspaper.
So वो बट ही मैंने है कहा कि यार, ये तो हाँ बेइज्जती हो गई यार. सर यही तो So आर्ट है ना सर. this दोज हु आर इन द मैनेजमेंट वो किस बेइज्जती को दे कन्वर्ट इनटू ऑनर. दे कन्वर्टेड. no, it was not like a बेइज्जती. नहीं, I He mean is to my say joke, colleague. joke. I mean to say mistakes. I mean to But say it mistakes turned and all into that. the joke. We turn around. We turn around. We turn around. So we HR people are trained in सर such a बिल्कुल way. बिल्कुल बिल्कुल सर. कौन सी बात को कैसे संभालनी है सर, वही सिखाया गया पूरे मैनेजमेंट में. तो संभाल उसे, बैलेंस इट. Managing the scarcity. थैंक यू सर. So it is my pleasure. You invited me for this session. Thank you so much for joining, So sir, from Chhattisgarh. thank you very much, sir. Thank you, and Thank have you. a wonderful time, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, And sir. I'll also take a leave actually, please, now Nitin. time is Thanks on. a lot for. Thank you, Pooja. Yashna, Thanks beta, a make a lot for. closing. Okay. Make a closing, and then we close. Okay. Thank you so Thanks much. to everyone. Thanks to everyone. Thank you, Thanks to everyone. participants. Bye, Take sir. care. Thank you, Yashna, beta. Make a closing. Okay. Just the last closing words, and then say thank you to everybody, and then we close. Okay. हाँ बेटा, याशना. Okay. Well, thank So- you everyone for joining our jokes tournament. Hope everyone was very happy. Well, we tried to be very informal and stuff. So, We are very informal. Yes, Yashna. Yes. Continue, beta. So we do these events every week. Every week something or the other happens. You will get a notice and all that. Please take time. It's a very informal event, no formalities. Even you observe the person who was Mr. Sanjeev, he was the HR head in a very top company in Chhattisgarh. He just joined just like that. Then we had Nitin sir is here. It seems so. Nitin sir has joined. Yes, yes, I am here, sir. I didn't saw you. Sorry, sir. Sir, आपका जोक रह गया फटाफट सर. आपका एक जोक रह गया. Pooja ma'am, Nitin is one of my colleague at my university, and he's a wonderful singer, wonderful poet, wonderful philosopher, wonderful thinker, and wonderful. He has wonderful 2 daughters, amazing singers. Okay. Hi, Hi, Aditya. Nitin sir, बताओ sir एक joke Oh, and then Nitin. we Hi, close. Nitin. Hi, Nitin. I'm sorry, I misheard your name. Hi. Hello, hello. Very nice. I'm sorry, I actually joined late, a little late. No problem, no problem, sir. Just one joke and then we close after your joke. I just ran away and just joined over here. No problem, sir. Just एक joke सुना दीजिए and then I think we didn't saw your name. दो सोच रहा था सर, आप मुझे 2 का मौका देंगे, आप मुझे 1 पे कट कर रहे हैं सर. सर आप 2 सुना दो सर, आप 2 सुना दो. आप 2 सुना दीजिए. Pooja, I think you have to leave. Pooja, you are saying you have to leave, right? Yeah, I'll So, take your leave. thank you so And much. thank Thank you, you so much, everyone. Pooja. Take care. Bye. Bye, Pooja. Thank you for joining. Bye bye. Thank you. जो कुछ नहीं है, बस एक कहते हैं ना कि बच्चों के जो हम लोग एज ए टीचर व्हेन वी इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट्स वी कम अक्रॉस सो मेनी थिंग्स एंड द स्टूडेंट्स एक्चुअली टीच अस सो मेनी थिंग्स, इजंट इट? सो अभी एक स्टूडेंट था, उससे टीचर ने पूछा कि बेटा न्यूटन के लॉ बताओ, तो याद है? बोले सर पूरा याद नहीं है, थोड़ा सा याद है सर, थोड़ा सा सर. तो टीचर बोला चल ठीक है भाई, जितना याद है उतना ही बता दे. तो सर लास्ट की लाइन याद है, बस लास्ट की लाइन. अच्छा लास्ट की लाइन बता दे. तो लास्ट की लाइन है, और इसे ही न्यूटन का लॉ कहते हैं. That happened with our student also. Sir, we ask any question in the exam paper and all that. The first statement is this always. This is the most important thing in the management. This is the most important thing in this. ये तो सब जगह लिखा ही होता है. तो वो 1 पॉइंट हो जाता है ना. 1 point हो जाता है. This is the most important thing. Everybody want it. Management cannot live without that. This is the focus Most thing. important. ये तो लिखना ही लिखना है. Sir, So दूसरा. there's just one more thing, very small one, and it's not a joke, but it's just a professional advice, a professional thing, मतलब professional knowledge, कि मतलब लोग को पता होना चाहिए कि आखिरकार बड़े-बड़े शिकारी लोग कैसे काम करते हैं, शिकार करता है.
So it's not a, it's not a joke. Please do not treat it as a joke. Please take it very, very seriously. It is coming from a person who has a lot of experience in doing this. तो सर शेर के शिकार बहुत लोग करते हैं, कुछ लोग चिड़िया का शिकार करते हैं, कुछ लोग हिरन का शिकार करते हैं. मैं आपको बताऊंगा कि मगरमच्छ का शिकार कैसे किया जाता है. Anyone knows कि how a crocodile is hunted? सर मैं आपको बताता हूँ कि मगरमच्छ का शिकार कैसे किया जाता है. इसके लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत पड़ेगी. एक तो आप ले ले एक माचिस की डिब्बी, एक खाली डिब्बी ले ले माचिस, एक छोटी सी फॉर्सेप ले लें, एक दूरबीन बाइनाकुलर ले लें, और एक आप ऐसी किताब ले लें जिससे आपको भयंकर, ठीक है ना, जैसे कि मैथमेटिक्स की किताब फॉर एग्जाम्पल, राइट. आप नदी के किनारे जाएं जहां क्रोकोडाइल रहता है, वहां जाके पेड़ के नीचे आराम से लेट जाइए और मैथ्स की किताब पढ़ना शुरू कर दीजिए. अब मैथ्स की किताब चूंकि बोरिंग है तो आप सो जाएंगे. मगरमच्छ बाहर निकलेगा, वो आपको देखेगा, वो कहेगा अच्छा शिकार, वेरी नाइस, चलता हूँ. वो आपको खाने के लिए आएगा, लेकिन अचानक उसकी नजर पड़ेगी उस किताब पे. वो किताब, चूंकि मगरमच्छ भी पढ़ा लिखा है, तो उस किताब को उठाएगा, देखेगा, उसको शायद इंटरेस्टिंग लगे, थोड़ा सा पढ़ना शुरू करेगा, लेकिन इंटरेस्टिंग नहीं है, वो सो जाएगा. अब देखिए, चूंकि आप पहले सोए हैं इसलिए आप पहले उठेंगे. चिंता मत कीजिए, मगरमच्छ अभी सो रहा है, कुछ मत करना है. आपने अपनी बाइनाकुलर लीजिए, उसको उल्टा करके देखिए, मगरमच्छ बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा. उसको फोर्सेप्स से पकड़िए, खाली माचिस की में डालिए और घर आ जाइए. वेरी सिंपल. बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा. Thank you so much for how to catch a crocodile, sir. Next time in next session you will tell us how to catch dinosaur. Catch dinosaur, sir. Thank you, sir. बस शेर पकड़ने के बहुत सारे फार्मूले हैं, तो फिर कभी सुनाऊंगा. बिल्कुल सर. Thank you. चलो ठीक है यार. Thank you so much नितिन सर, आदित्य सर, याशना बेटा, thank you so much. ठीक है. Thank you so much everybody. Those of you who have joined will get a certificate. Don't worry. Okay. Thank you so much. Yashna, certificate. I have sent you the list of the names by the Excel file. Okay. And then the certificate will be issued to you by you to everybody. Those of you who came. Okay. Thank you so much. Bye, beta. Bye, everybody. Thank you for joining. Thank you so much. Bye, beta. Bye.